Hey, good afternoon, everyone. Pro learners, quickly join the Zoom meeting. Today, I thought we should take past tense. That will be a continuity, right? So quickly change the topic if you can see any other topic like subject or predicate or anything else. So let's start with past tense. Yesterday is yesterday and day before yesterday. We learned about present tense. We use present tense when we talk about present actions. Now let's talk about past tense. Let's start with first slide. Someone please read. Simple past tense. The simple past is used to indicate an action completed in the past. If often occurs with adverbs or adverb phrases of past time. Example, the steamer sailed yesterday. Second, I received his letter a week ago. Sometimes this tense is used without an adverb of time. In such cases, the time may be either implied or indicated by the content. Example, I learnt Hindi in Nagpur. Second, I didn't sleep well last night. The simple past is also used for past habits. Example, he studied many hours every day. Second, she always carried an umbrella. Guys, very simple. Past tense हम कब यूज करते हैं? जब हम पास्ट के एक्शन के बारे में बात करते हैं, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना, कोई भी ताल्लुक नहीं है. Please understand this. We use past simple tense when we talk about any action which is already completed in the past. It has no reference to the present. Okay. It often occurs with adverbs or adverb phrases of past time. तो guys, जब हम past के बारे में बात कर रहे हैं तो हम time का भी use करेंगे. For example, कोई काम जो मैंने कल किया, for example, I went to the market yesterday. तो yesterday क्या है? Adverb of time है, जो हमें प्रेजेंट टेंस में नहीं यूज करना, सिर्फ पास्ट टेंस में यूज करना है. ठीक है. तो यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये जो सारे लास्ट नाइट होते हैं, तो ये सब हम कहाँ यूज करते हैं? पास्ट टेंस. इसका प्रेजेंट से और फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं है. इट इज ऑल अबाउट पास्ट. पास्ट क्या है? बीता हुआ कल. फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज थर्सडे, द 24th March. यस्टरडे वाज वेडनेसडे, 23rd of March. तो जो बीता हुआ कल है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट. ओके. फॉर एग्जाम्पल, द स्टीमर सेल्ड यस्टरडे. स्टीमर कौन होते हैं? जो नाव को चलाते हैं. तो सेल करना, ले जाना, तो उसने सेल किया यस्टरडे, वो कल नाव लेके गया. आई रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो. मुझे उसका लेटर कब मिला? अ वीक अगो, एक हफ्ते पहले. Sometimes this tense is used without an adverb of time. Sometimes we can use it क्योंकि already हमें पता है, अगर मैं बोलूं I went to the market, तो आपको पता है ये मैं past में गई थी. फिर अगर आप पूछेंगे when, then I can say yesterday, day before yesterday, last week, last month, a week ago, a month ago, right? For example, I learned Hindi in Nagpur. मैंने नागपुर में हिंदी सीखी थी. तो वेंट जो सेकंड फॉर्म हमारी वर्ब की है, हम वो यूज कर रहे हैं, लर्न्ड. इसी से हमें पता चल गया कि पास्ट के बारे में बात हो रहा है, राइट? नेक्स्ट वी हैव आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. फॉर एग्जांपल, तो आप लास्ट नाइट भी लगा सकते हैं, आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं आई डिडंट स्लीप वेल. तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो सामने वाला तो पूछेगा ही when didn't you sleep well? Oh, last night I couldn't sleep, or I didn't sleep well, right? So do की second form did.
right? Next we have the simple past is also used for past habits. Present habits के लिए हम क्या use करते हैं? Present simple tense habitual actions के लिए. But जो हमारी past की habits होती है उसके लिए हम क्या use करते हैं? Past tense. इसके लिए हम use करते हैं she studied many hours every day और she used to study many hours every day. तो हम यहाँ पे यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं. शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला रखती थी. शी यूज टू कैरी एन अम्ब्रेला विद हर. मर्जिया, राइट? All right. Next slide. Someone please read. Yes, ma'am. We use the simple past tense to talk about something that happened once in the past. Example, first, I met my wife in 1983. Second, we went to Spain for our holidays. Third, they got home very late last night. Something that happened again and again in the past. Example, first, when I was a boy, I walked a mile to school every day. Second, we swam a lot while we were on holiday. Third, they always enjoy visiting their friends. Something that was true for some time in the past. Example, I lived abroad for 10 years. Second, he enjoyed being a student. Third, she played a lot of tennis when she was younger. We often use phrases with ago with the past tense. Example, I met my wife a long time ago. Yes, guys. So very simple. Now we have more uses of past tense. So we have already learned few uses on the previous slide. Now in this slide, we can see we use simple past tense to talk about something that happened once in the past. कोई काम जो एक बार हुआ है हम उसके लिए भी past tense का यूज कर सकते हैं, जो काम बार बार हुआ है उसके लिए भी. So that totally depends. I met my wife in 1983. For example, you are married to someone and you met your wife in 1983, for example, 1996, 2010, 2020. So you can say that. So we are using second form of verb, meet, met, second. We went to Spain for our holiday. So once we went to Spain on our holidays. एक बार हम Spain गए थे अपने holidays पे. Went is the second form of go. Go, went. They got home very late last night. Got is the second form of get. They got home very late last night. Next uses something that happened again and again in the past. So guys, very simple. We can talk about thing that happened once and the thing that happened again and again in the past. Very simple. When I was a boy, I walked a mile to school every day. जब मैं छोटा था मैं रोज पैदल स्कूल जाता था. We swam a lot while we were on holiday. Swam is the second form of swim. हमने बहुत swimming करी है जब हम holidays पे होते थे, right? And they always enjoy visiting their friends. They always enjoyed visiting. उन्हें हमेशा अच्छा लगता था दोस्तों से मिलना. Next, something that was true for some time in the past. तो कुछ टाइम के लिए true था, उसके बाद वो खत्म हो गया. I lived abroad for 10 years. तो 10 years में abroad रहा, उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया. He enjoyed being a student. Student life कब से कब तक की होती है? It is about 20 years maximum. तो वो 20 years का period he enjoyed being. Everybody, right? Everybody enjoyed or we enjoy being a student. She played a lot of tennis when she was younger. Now she has got married and she has 2 kids. We often use phrases with ago in the past tense. I met my wife a long time ago. I met him a long time ago. Okay. Now guys, these all are positive sentences. जिसमें हम पॉजिटिव बातें कर रहे हैं. आई मेट माई वाइफ इन 1983. इसी को अगर आपको नेगेटिव करना है तो आप क्या यूज करेंगे? नॉट. नॉट किसके साथ यूज करेंगे? डिड के साथ, बिकॉज डिड इज द हेल्पिंग वर्ब दैट वी आर यूजिंग इन पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस पे हम क्या यूज कर रहे थे? डू एंड डज.
राइट, डू नॉट, डज नॉट. अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड नॉट. आई डिड नॉट मीट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. आई डिड नॉट मीट माई वाइफ इन 1973. आई मेट माई वाइफ इन 1983. ओके, इसके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी होते. सो लेट्स रीड the next slide. Questions and negative in simple past tense. Question and negative in simple past tense. We use did to make question with the past tense. Example: when did you meet your wife? Where did you go for your holidays? Did she play tennis when she was younger? Did you live abroad? But look at these questions. Who discovered penicillin? Who wrote Don Quixote? These are called subject questions because the question word is the subject of the sentence. There is no auxiliary verb and the word order is not inverted. We use didn't, did not to make negative in the past tenses. In the past tense, example, they didn't go to Spain this year. We didn't get home until very late last night. I didn't see you yesterday. That's it. So again guys, क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे कि तुम अपनी वाइफ से कब मिले थे. व्हेन, कब. व्हेन डिड यू, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, डिड. व्हेन डिड यू मीट योर वाइफ. आंसर क्या होगा, आई मेट माई वाइफ इन 1983. वेयर डिड यू गो फॉर योर हॉलीडेज. आंसर क्या होगा, सॉरी वाली स्लाइड यहाँ, वी वेंट टू स्पेन फॉर आवर हॉलीडेज, राइट. फिर डिड शी प्ले टेनिस व्हेन शी वाज यंगर. आंसर क्या होगा, the answer is yes, she played a lot of tennis when she was younger. And last, did you live abroad. In abroad नहीं होता, did you live in abroad नहीं होगा, did you live abroad. So यहाँ पे आंसर क्या है, I lived abroad for 10 years. Yes, I lived abroad for 10 years. Perfect. Now look at these questions. Who discovered penicillin? What is penicillin? I think it's a medicine or something. Who wrote Don Quixote? It's a theory. So these are called subject questions because the question word is the subject of the sentence. There is no auxiliary verb and the word order is not inverted. तो इसमें हम did का use कर रहे हैं ऊपर वाले questions में, but ये जो नीचे वाले questions है who discovered, not who did discover, तो इसमें हम नहीं use कर रहे because they are general questions. So we use did not or didn't to make negatives in the past tense. मैंने आपको already बताया है, they didn't go to Spain this year. उस साल स्पेन नहीं गए. We didn't get home until very late last night. हम बहुत देर तक कल घर नहीं आए. I didn't see you yesterday. मुझे कल तुम नहीं दिखाई दी. For example, you work in same office and आप कह रहे हो कि कल यार तुम देखे नहीं, कल ऑफिस नहीं आए. Right? I didn't see you yesterday. Easy? If you have any question, guys, feel free to ask. Now next we have past continuous. So past simple का जल्दी से एक recap ले लेते हैं. Let me just tell you about past simple tense very quickly on this whiteboard. If you are not able to see that screen, please tap twice on your mobile screen. You will be able to. So today we are learning past tense. Okay, in past tense we have 4 tenses. First is positive, no, we call it simple past. Then we have continuous, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है. Then we have perfect, just like present tense, and last perfect continuous. Okay, so today we are learning about simple past tense that we have already read in this slides.
सो सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास अगेन हर टाइप 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. 3 we can go for. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन डाल रही हूँ, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा. पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? We simply use subject plus verb की second form of verb plus object. Very simple. I went to the market. ठीक है. Now guys, very simple. इसमें आप एडवर्ब ऑफ टाइम भी यूज कर सकते हैं, वो कंप्लीटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है. आप लिख सकते हैं yesterday, day before yesterday, last week. It is completely optional. अगर आप ये भी बोलेंगे I went to the market, it is also correct. Okay. Next we have negative sentence. Negative के लिए I am giving you this negative sign. Okay. Negative sentence में हमारे पास क्या होता है? We have subject plus did. यहाँ पे हम did का यूज करते हैं as an helping verb. Did के साथ हम यूज करते हैं not plus verb की. Now this is very important, so I want your 100% attention here. With did we use first form of verb, not second form of verb, because did is already the second form of verb. Do की second form है did, तो हम already एक सेकेंड फॉर्म यूज करें तो हम दोबारा सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे. वी कैन नॉट यूज टू सेम फॉर्म्स इन वन सेंटेंस. सो आई डिड नॉट प्लस verbs first form and object. For example, I did not go to the market. Again, yesterday is optional. Right? तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस. इजी. अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, जिसमें हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क. तो मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन मार्क लगाया है so that you will understand. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में गाइस हमारे पास 2 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. होते हैं yes no क्वेश्चन, जिसमें हम सिर्फ yes और no में आंसर कर सकते हैं. एक होते हैं इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, जिसमें हम WH फैमिली का यूज करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इन yes no क्वेश्चन में बोलूंगी डिड यू अगेन गो. ओहो, मैं फॉर्मूला लिखना भूल गई. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड. No. Did plus subject. Yes, यहाँ पे हम subject और did की पोजीशन को स्वैप कर देंगे. Did पहले आएगा, subject बाद में आएगा, प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क. तो हमारे पास सेंटेंस क्या बना? Did you go to market again yesterday? उस कमरे में चल रहा, मैं लगाऊं चूचू. ये पापा का लैपटॉप बंद कर दे, अभी पापा आएंगे, उनको जरूरत पड़ेगी. Unmute. Who's unmute? Keep yourselves on mute, please. Right. Ma'am, the market or market which is correct? To the market. No, sorry, I forgot the here. Yes. Did you go to the market yesterday? Because we are talking about a particular market. Yes, I did. No, I didn't. Answer क्या होगा? Yes, I did. No, I didn't. अब आते हैं next जो है हमारा WH question. उसमें हम यूज करते हैं WH का कोई भी वर्ड डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन. देन डिड, सेम बाकी सब जाएगा. देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, when did you go to the market? Right? तो आंसर क्या होगा? आई वेंट टू द मार्केट yesterday. तो जो हमने फर्स्ट आंसर किया था, वही जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, वही हमारा आंसर हो जाएगा. आई वेंट टू द मार्केट yesterday, पॉजिटिव. आई डिड नॉट गो टू द मार्केट yesterday और day before yesterday, negative sentence. Did you go to the market? Interrogative, yes no question. When did you go to the market? Interrogative, information question. So guys, please इस चीज को jot down कर लीजिए. This is very important if you are learning tenses. आपको ये प्रॉपर इसकी समझ होने चाहिए सिंपल टेंस की. ओके, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, जो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे.
कॉन्टिन्यूस फॉर्म कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा. प्रेजेंट सिंपल सॉरी पास्ट सिंपल टेंस सबको क्लियर हो गया. इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क. गो अहेड. No questions? And then stop sharing. Perfect. Let's move to the next slide. Past continuous tense. It is very easy, guys. जैसे हम present continuous tense current actions के लिए use करते हैं. For example, I am teaching, you are studying, we are learning, they are playing. ऐसे ही हम past continuous tense का use करते हैं past के लिए. Someone please read. Past continuous tense. Go ahead. Yeah. Go. The Hello? past continuous tense. Yes, ma'am. The past continuous is used to denote an action going on at some time in the past. The time of the action may or may not be indicated. Example: we were watching TV all evening. It was getting darker. The light went out while I was reading. When I saw him, he was playing chess. In the last two examples above, the past continuous and the simple past are used together when a new action happened in the middle of the longer action. The simple past is used for the new action. This tense is also used with always, continually, etc. for persistent habit in the past. Example: we was always grumbling. वेरी सिंपल. कोई काम जो आप पास्ट में कर रहे थे उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे. कोई काम जो पास्ट में हो रहा था तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं डांस कर रही थी, वो गाने सुन रहा था, वो खाना पका रही थी, वो ड्राइव कर रही थी, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ रहा था. तो ये जो सारे काम होते हैं जो पास्ट में हो रहे थे उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी वर वॉचिंग टीवी ऑल इवनिंग. सो मैंने आपसे पूछा तुम कल शाम क्या कर रहे थे, तो आप क्या बोलोगे? वी वर. और आई वॉज वॉचिंग टीवी ऑल इवनिंग. मैं सारे शाम टीवी देख रहा था. सेकेंड, इट वॉज गेटिंग डार्क. रात हो रही थी. इट वॉज गेटिंग डार्क. अंधेरा हो रहा था. अंधेरा कब होता है? 6 बजे के बाद ना, मगरिब के टाइम जब सूरज ढलता है, सनसेट होता है, तो अंधेरा होने लगता है. Now the light went out while I was reading. Guys, यहाँ पे the light went out ये हमारा past simple tense है. उसके बाद हमने while से कनेक्ट किया है I was reading. तो कोई काम कब हो रहा था, हम इसको बताने के लिए past simple tense और past continuous एक साथ यूज करते हैं, because we cannot use both tenses or two same form of verbs in one sentence. So the light went out, light चली गई while I was reading, जब मैं पढ़ रही थी या पढ़ रहा था. इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं. When I was reading, the light went out. Okay. When I saw him, he was playing chess. जब मैंने उसे देखा था वो चेस खेल रहा था. He was playing chess when I saw him. ऐसे भी हो सकता है. ठीक है. So in the last two sentences, light वाला और chess वाला, the past continuous and the simple past are used together when a new action happened in the middle of a longer action. कोई काम आप कर रहे हो उसके दरमियान कुछ हो जाए तब वो चीज बताने के लिए हम past simple और past continuous दोनों का यूज करते हैं. Okay, the simple past is used for the new action. This tense is also used with always, continually, etc. for persistent habits in the past. तो past की habits बताने के लिए हम always का use करते हैं. He was always grumbling. What is the meaning of grumbling? Nice. It's an adjective. So grumbling. Come on. Nobody knows. कार्तिक नहीं है आज क्लास में. शिकायत करना. Yes, the action or fact of complaining in a bad tempered way, उसको हम grumbling कहते हैं. कोई आपसे गुस्से में शिकायत कर रहा है, जैसे हम करते हैं ना, मम्मी इसको देख लो. This is called grumbling. Okay. Yeah, so he was always grumbling. हमेशा ही शिकायत करता रहता था.
past. Easy. So guys, now मैं फटाफट आपको ये विशाखा, you are raising your hand. Please go ahead. मैम हम वुड भी यूज कर सकते हैं पास्ट हैबिट के लिए। past तो habit यहाँ ही वुड ग्रम्बल, we would ही वुड ग्रम्बल मीन सेंटेंस ऐसा हो जाएगा ही वुड ग्रम्बल, Yes. क्योंकि वुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म form हम यूज आती है, करते yes. हैं, तो ही वुड ग्रम्बल। Yes, you can say that. So guys, यहाँ पे हमारे पास continuous tense ऐसा कह सकते हैं कह सकते हैं, but I think it is better to use he was always grumbling, past continuous tense. Alright guys, so past continuous में सबसे पहले हमारे पास क्या रहे, पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें आपको पॉजिटिव का साइन दिख गया, इट मींस पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हम नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी was were। अब was were क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। एक्चुअली स्टूडेंट्स इतनी लेट ज्वाइन करते हैं ना, so was were they are the helping verb, they are the past tense of is, am, are। इसका past was, am, are का past were। so subject plus was were plus verb की first form plus ing, just like past tense, present continuous tense हम past continuous tense का यूज करते हैं, ठीक है। so was were plus verb ing, for example I was sleeping on the couch, I was sleeping on the couch। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, ये कौन है भाई, इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहे हैं वीवो। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस was were तो आएगा ही आएगा, राइट। इसके साथ हम यूज करेंगे नॉट, जैसे हमने डिड के साथ नॉट यूज किया था, ऐसे ही हम was were के साथ नॉट यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट I was not sleeping on the couch। इसके आगे मैं डॉट्स लगा दूं, so it will be easier। Okay guys, नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव भी हमारे दो टाइप के हैं, तो पहले हम जो was were से बनाएंगे, हम सब्जेक्ट और was were को स्वैप कर देंगे। was प्लस were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस की जगह इक्वल्स टू क्यों हो गया, यस। सो गाइस, was यूज होता है आई के साथ, ही शीट के साथ, और वर यूज होता है यू दे वी के साथ। वर यू स्लीपिंग ऑन द काउच, यहाँ पे मैं डॉट लगा देती हूँ, इससे आप समझ जाइएगा, ठीक है। वर यू स्लीपिंग ऑन द काउच। एंड लास्ट हमारे पास है WH क्वेश्चन वाला, तो इंट्रोगेटिव में हम WH फैमिली का यूज करेंगे। WH फैमिली प्लस was प्लस were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी लगता है, सो उसका आप ध्यान रखिएगा। वेयर वर यू स्लीपिंग, अब क्या बताएंगे, आंसर क्या हो जाएगा जो हमने पॉजिटिव में किया था, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द काउच। इजी। वेयर वर यू स्लीपिंग, इसके साथ अगर आप चाहें तो लास्ट नाइट लगा सकते हैं, वरना ऐसे भी रह सकते हैं। वर यू स्लीपिंग ऑन द काउच, I was not sleeping on the couch. Yes, Dipali, you are raising your hand. Ma'am, please can you tell me it was getting darker Hindi meaning, ma'am? It was अंधेरा हो रहा था। Okay, ma'am. Thank you. No problem.
तो गाइज ये हमारा कंप्लीट जो है कॉन्टिन्यूअस आ गया. मैम फर्स्ट लाइन ing plus object no. Oh God, redo, and do. Yes, what? First line ing plus object. अरे हाँ ना, वो आप लोग कर लो. कभी कभी लिखने में इतना ध्यान नहीं जाता मेरा. Okay मैम. Okay. So guys, yes, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, मैं अभी इसको नहीं हटा सकती क्योंकि पूरा वो हटाना पड़ेगा. So subject was were plus ing plus object, सबके साथ ऑब्जेक्ट ही है बाकी. ठीक है, थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई हो, so just ignore it. I was sleeping on the couch, present. I was not sleeping on the couch, negative. Positive, negative. Were you sleeping on the couch? Interrogative. Yes, no. Yes, I was. No, I wasn't. Answer ही हो सकता है. And last, where were you sleeping? WH family के साथ information question. Now let's quickly start with the quiz. और किसी का I believe कोई question नहीं है. So we have 20 minutes only. Screen is not visible properly. Jaya, if you touch on the screen, if you click twice, then it gets visible, I believe. So first quiz slide, pick the correct option. The earth moves around the sun or moved. ये प्रेजेंट का क्यों दे रखा है इन्होंने? मैं बहुत परेशान हूँ भाई इन स्लाइड्स से. पर पास्ट रहे, क्वेश्चन प्रेजेंट से आ गया है. Sleep. I did not sleeping नहीं होगा गरिमा. I was not sleeping होगा. Did verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है. Was were ing के साथ यूज होता है. Ajmol, please answer. The earth moves around the sun. Guys, this sentence or this slide, this example is from present simple tense. The earth moves around the sun. अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमती है. So this is present because this is general truth. My friends dashed the prime minister yesterday. This is past. Were seeing, have seen, saw. Yesterday, बीता हुआ कल. इट्स ओके गरिमा, आपने अभी ज्वाइन करा है तो मैं आपका जो मिस्टेक है उसको करेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी नहीं आती. तो आई वॉज स्लीपिंग होगा, आई डिड नॉट स्लीपिंग नहीं होगा. आई सॉ यू लॉन्ग टाइम नहीं आता. आई हैव सीन यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. अमित, प्लीज आंसर. Yes, ma'am. My friend saw the prime minister yesterday. Yes, guys, yesterday कहाँ यूज होगा? पास्ट के बाद जब हम कर रहे हैं. तो my friends were seeing ना. Have seen present perfect tense no. Saw मेरे फ्रेंड्स ने कल प्राइम मिनिस्टर को देखा था. प्रिया, प्लीज ध्यान से आंसर करिए. आपकी दोनों स्लाइड्स में आंसर गलत है. नेहा, दीपाली, अमित, अंशु, प्रताप. Next slide. She dash worried. She looked worried or she was looked worried. This is very easy. Amit, was के साथ ing form. Very good. Ajmol, Sifat, Yogita, Neha. इतना पढ़ाने का फायदा तो है नहीं, आप लोगों को वही मिस्टेक्स करनी है. अनामिका, प्लीज आंसर. Yes, ma'am. She looked worried. She looked worried. वो परेशान लग रही थी. लुक का मतलब लगना, दिखना. वो परेशान दिख रही थी या परेशान लग रही थी. राइट, नॉट she was looked. गाइस, अगर was के साथ ing होता तब ये आंसर करेक्ट होता. she was looking worried. बट उन्होंने was के साथ आपको ed फॉर्म दिया है, which is incorrect. प्लीज इसको जो आपने निकाल के रखा है ना साइड में, इसको वापस लगाइए. जरूरत है आपको क्विज में इसकी. नेक्स्ट स्लाइड. It started to rain while we dashed tennis. We were playing tennis or we played tennis?
गरिमा, मैं सही आंसर वालों के नाम नहीं लेती, जो स्टूडेंट्स गलत आंसर करते हैं मैं उनका नाम लेती हूँ। इफ यू वांट मैं आपका ले लूंगी गलत आंसर वालों के साथ नाम। धार्मिक, प्लीज आंसर। It started to rain while we were playing tennis. Yes. So guys, it started to rain. इतना जो सेंटेंस है हमारा ये पास्ट सिंपल है, ठीक है। It started to rain. बारिश होनी शुरू हो गई थी while we were playing tennis. जब, while का मतलब क्या है, जब हम टेनिस खेल रहे थे। હેરાન કરવા આવી જાય જ્યારે મારા સ્લાઇડ ચાલુ થાય ને આવી જ જાય મારી બાજુ એવી છે ને। शाखा, you are unmute. ઓ सॉरी। अच्छी बात है, आप अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे Sorry, समझ sorry, में आ गया। हमें किसी मुझे समझ में आ गया। Tarup, you are raising your hand. Yes, ma'am. Can we say it started raining? Again, it started raining अगर आप यूज करोगे तो we were playing, दो ing फॉर्म यूज होंगी। एंड आप, मैंने आपको क्या बताया, एक सेंटेंस में दो सेम फॉर्म्स नहीं यूज हो सकती। Okay, ma'am. Yes, it's very good that you ask questions. इसका मतलब है आपको समझ में आ रही हैं चीजें। It started raining होगा तो यहाँ पे हम we were playing नहीं हो पाएगा। It started raining और while we played tennis ऐसे हो सकता है। Okay, बट ma'am. फील ही नहीं आ रही फिर। नेक्स्ट स्लाइड। He dashed fast when the accident happened. He drove fast or he was driving fast when the accident happened. Second form of verb. She was looked worried. Gautam. Who is Gautam? 1 second. Dipali, please answer. He was driving fast when the accident happened. वो गाड़ी तेज चला रहा था जब एक्सीडेंट हुआ। He was driving fast, चला रहा था। The accident happened, तो ये ऑलरेडी हमारा पास्ट सिंपल टेंस है, इसके साथ हम he drove नहीं यूज कर सकते। इजी। यस रहील, ईडी पास्ट में यूज होता है बिकॉज ईडी सेकंड फॉर्म में यूज होता है किसी भी वर्ब की, जैसे अभी यहाँ पे हैपेंड है तो ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। He dashed asleep when he was driving. He fell, he fell, he has fallen, he fell. What is the second form of fall? This is the reason why I tell you to learn 3 forms of verbs. Fail. आपको पता हो कि सेकंड फॉर्म में मुझे क्या फॉर्म यूज करनी है। फर्स्ट फॉर्म तो जनरली सबको ही पता होती है। गौतम, प्लीज आंसर। Unmute yourself and answer. Ma'am, he asleep while he was driving. Yes, he fell asleep. वो सो गया था while he was driving. That's why accident happened. इसलिए एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी चलाते चलाते सो गया था। होता है कभी कभी when someone is tired and someone is driving from a long time, तो obviously नींद आ जाती है। So that's why the accident happened. Amit, you are raising your hand. Yes, ma'am. What is different between sleep and asleep, ma'am? Sleep सोना, asleep सो जाना। तो सोया हुआ कोई है तो उसे हम asleep बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल he is asleep, वो सोया हुआ है। Don't wake him up, he is asleep. I am going to sleep, मैं सोने जा रही हूँ। So सोना is sleep, सोया हुआ asleep. Okay? Okay, ma'am. Thank Sleep you, ma'am. noun है, नहीं, asleep adjective है, sleep noun है, sleep verb भी है, ठीक है। Thank you, ma'am. नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे asleep हम उसकी आपको क्वालिटी बता रहे हैं कि वो क्या है। ही इज हंग्री, हंग्री एडजेक्टिव है। ही इज asleep, asleep एडजेक्टिव है। स्लीप नींद, नींद वाला स्लीप नाउन है, सोने वाला स्लीप वर्ब है।
जिसके साथ हम ing लगाते हैं. Sleep, slept, slept. We have 3 forms of sleep. Perfect. Next slide. So guys, fall की second form है fell. Fall, fell, fell. So he fell asleep. इसमें ed नहीं लगता because it's कौन से होते हैं? Irregular verb. रेगुलर वर्ब होते हैं जिनके एंड में ed आता है. सेकंड और थर्ड फॉर्म में irregular होते हैं जिनके नहीं आता. Next slide. I am sure I dashed him at the party last night. I saw him. I had seen. I have seen. All right. After Gautam, we have Jatin. Please answer. Yes, ma'am. I'm sure I saw him at the party last night. Yes, मुझे यकीन है मैंने उसे कल रात पार्टी में देखा था. So I saw, the second form of see. See, saw, seen. So guys, had seen past perfect में use होता है. Have seen present perfect में use होता है. So verb की जो हम third form use करते हैं वो perfect tenses में use करते हैं. It started to rain while we were playing tennis. Adverb of manner. Asleep is adverb of manner. No, it should be adjective. I need to check. No, it's asleep is adjective. It's not adverb of manner. Perfect. He dashed a mill in this town. He had a mill. Mill means company, factory. He was having a mill. Fasiha Sheikh, asleep is not adverb of manner. It is adjective. Just like tired, hungry, asleep. Next we have Jaya, Krishna, Talasu. We have 2 Jayas in class. Please answer. He had a mill in this town. उसकी इस गांव में या इस शहर में, टाउन इस शहर, सॉरी, मिल थी. He had is the second form of have. For example, I have a mobile phone. अब मुझे मोबाइल फोन मेरे पास है तो मैं have यूज कर रही हूँ. मेरे पास अगर ये past में होता तो I would have said I had a mobile phone. So he, the third person we are talking about, had a mill, a factory in this town. उसकी इस शहर में एक फैक्ट्री थी, एक मिल थी. Not having. Next. I dash a strange noise. I was hearing or I heard a strange noise. Kalpana, please answer. I heard a strange noise. I heard a strange noise. मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी. This happens when you watch At a horror night. movie. Yes, when you watch a horror movie. When you are alone at your home. Yes, and when you're alone at home. ना चाहते हुए भी ना अजीब अजीब सी आवाज आती हैं जो रोज आती होंगी, but हमें वो अजीब लगती है because we are alone and we are scared. Human psychology, human nature. I had a strange noise. I heard. Second form of hear, सुनना. उसकी second form होती है heard. Next slide. Yesterday, I dashed a book in the park in the afternoon. I was going to the post office, was buying some fruit at the supermarket and read a book. Or yesterday, I went to the post office, bought some fruits at the supermarket and read a book in the park. Yes, very simple. Mehak, please answer. I went to the post office, bought some fruit and the supermarket and read. A book in the park in the afternoon. Yes, guys, the second answer is correct. तो इसमें हम 3 actions के बारे में बात कर रहे हैं. मैं कल की बात बता रही हूँ. कल
पहले मैं आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस गई, बॉट सम फ्रूट्स एट द सुपरमार्केट, फिर मैंने सुपरमार्केट से कुछ फ्रूट्स खरीदे, एंड रेड अ बुक इन द पार्क इन द आफ्टरनून, और दोपहर में मैंने पार्क में बैठ के बुक पढ़ी थी। तो सारा ये जो काम है ये पास्ट में हो रहा है, था, थी, था है, थे है, थी है, ठीक है। सो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। Ma'am, can we use from the supermarket? डेफिनेटली वी कैन से फ्रॉम द सुपरमार्केट, और एट द सुपरमार्केट भी ठीक है। फ्रॉम द सुपरमार्केट बॉट सम फ्रूट्स, एट ये बता रही है सुपरमार्केट में, मैंने में, एट हो गया में, सुपरमार्केट में फ्रूट्स खरीदे, फ्रॉम हो गया सुपरमार्केट से, सो यू कैन यूज बोथ, मतलब एनी। विशाखा? नहीं, बस यही सवाल पूछना था, फ्रॉम यूज कर सकते हैं या नहीं? Yeah, we can definitely use from. Next slide, because they both are preposition. Abdul dash to be a doctor. Abdul wanted to be a doctor, or Abdul was wanting to be a doctor. Sweetie bought means खरीदना, bring की buy की second form होती है bought, buy means खरीदना, past tense में bought हो गया खरीदा था, तो मैंने fruits खरीदे थे। Nazim Sheikh, please answer. You can see I can read some new names in my class today. Nazim, please unmute yourself and answer. No, he's not. Neha? Yes, ma'am. Abdul wanted to be a doctor. Yes, so maybe we are talking about Dr. Abdul Kalam. He wanted to be a doctor. Yes. वो डॉक्टर बनना चाहते थे या चाहता था, whatever you feel like saying. Was wanting incorrect. तो गाइस हमने ये उस दिन भी पढ़ा था कि कुछ verbs होते हैं जिनके साथ हम ing नहीं यूज कर सकते, तो want is the one. The soup dash good. The soup was tasted, was tasting, or tasted good. All right. Pratap, please answer. Yes, ma'am. The soup tastes good. Taste नहीं है, tasted है. हम Tasted good. Yes. The soup tasted good. So guys, taste ऐसा verb है जिसके साथ हम ing नहीं यूज करते, just like want. ठीक है? So was tasting नहीं आएगा. The soup tasted good. Soup बहुत tasty था. इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? The soup tasted good. Next. He dashed TV most evenings when he was younger. He was watching or he watched? रघुवेंद्र, आपका आंसर मैं लास्ट में करूंगी. ओके, सो होल्ड योर हॉर्सेस. कल ही कंप्लीट हो जाए. आई विल डेफिनेटली टेल यू द डिफरेंस बिटवीन बीन एंड गॉन. वॉज टेस्ट. किरण, टेस्ट होता है इम्तिहान, जैसे दिस इज माय टेस्ट. टेस्टेड अलग है. कंफ्यूज नहीं होना वर्ब्स में और नाउन में. साजिल, प्लीज आंसर. He watched TV most evening when he was younger. जब वो छोटा था वो शाम को बहुत टीवी देखा करता था. मोस्ट इवनिंग, वो टीवी देखा करता था मोस्ट इवनिंग, ज्यादा इवनिंग्स में. ही वाज यंग. म्यूट योरसेल्फ. परफेक्ट. सो गाइस, watched is the right answer. was watching नहीं होगा. He was watching TV last night हो सकता है. He was watching TV last evening हो सकता है. He was watching TV yesterday हो सकता है. But when he was younger नहीं होगा. जब हम past habits के बारे में बात करते हैं, हम present past simple tense का यूज करते हैं. स्लाइड में पढ़ा था, इसलिए मैं बोलती हूँ keep the points in your mind or in your notebook. Next slide. When he lived in Hyderabad, he dashed to the cinema once a week.
when he lived in Hyderabad he was going or he went to the cinema once a week. Again हम past habit के बारे में बात कर रहे हैं, कोई काम जो past में बार बार हुआ. Priya, please answer. When he lived in Hyderabad, he went to the cinema once a week. जब वो हैदराबाद में रहता था या रहा था, when he lived रहा था, तो वो सिनेमा जाता था हफ्ते में एक बार, once a week. So past, yes. Ma'am, when he lived in Hyderabad, he was going to the cinema once a week. It's wrong. No, yes, Gautam, it is wrong. He was going to the cinema. No, we use was, were with ing to talk about one action that happened once only. For example, I was going to the market yesterday and I saw a big elephant. तो मैं कल मार्केट जा रही थी, मैंने एलिफेंट देखा. ठीक है, तो was were ing का हम यूज तब करते हैं जब हम पास्ट में कोई काम कर रहे थे एक ही बार, बार बार नहीं. तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था something that happened again and again in the past, we use simple past tense to talk about it. दोबारा से इस स्लाइड को पढ़िए गाइस. We use the simple past tense to talk about something that happened once in the past, एक बार हुआ है उसके लिए. Something that happened again and again in the past, तो वो बार बार हफ्ते में एक बार जाता था, मतलब हर हफ्ते वो जाता था सिनेमा. तो something happened again and again, and something that was true for some time in the past. ठीक है, past continuous का यूज सिर्फ कहाँ हम यूज कर रहे हैं, is denoted an action going on at some time in the past, not at again and again. The time of the action may or may be not indicated. बस past simple tense का एक ही यूज, past continuous tense का एक ही यूज है. past simple tense के कितने यूजेस है? Previous slide please. सबसे पहला यूज, as you can see, to talk about past action that is completed in the past. Then we use it with adverbs of noun, is used for past habits. Second हमारा past habit के लिए हम यूज करते हैं. फिर कोई काम जो past में एक बार हुआ, बार बार हुआ, लंबे समय तक रहा. तो 5 यूजेस है हमारे past simple tense के. past continuous tense का एक ही यूज है, कोई काम जो हम past में एक ही बार कर रहे थे उसके लिए. ओके गौतम? अगेन एंड अगेन Okay, एंड ma'am. हैबिट, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगेन एंड अगेन और हैबिट, हैबिट होती है आदत. अगेन एंड अगेन कोई काम आप बार बार कर रहे हैं. Okay, next. I dashed Kumar this week. I haven't seen or I did not see Kumar this week. This week हम इस हफ्ते की बात कर रहे हैं. पता नहीं प्रेजेंट की स्लाइड क्यों घुसा दी है इसमें. Maybe just to check whether you are getting the present and the past correctly or not. Ma'am, but this question is good. This slide is it is relatable. चाहिए? I haven't seen Kumar since 6 months. Yes, this is better. Satish, what is the third form of irritable? Irritable is not verb. तो अगर वो verb नहीं है तो उसकी कोई form नहीं है. Next we have, okay, महक ने पहले ही आंसर दे दिया है. मैंने कुमार को इस हफ्ते नहीं देखा है या मैं नहीं मिला हूं उससे. So guys, this is present perfect tense. This week. कल ही प्रैक्टिस करिए. और आज कितने सारे स्टूडेंट्स ने आंसर इनकरेक्ट दिया है? धार्मिक, अजमोल, अनामिका, गौतम, विशाखा, प्रिया. Next slide. Ashok fell off the ladder when he dashed the roof. When he was mending or when he mended the roof. Mend का मतलब होता है बनाना या ठीक करना किसी चीज को. Shashikant, please answer.